Today's topic, first of all, I want to start with MD simulations. This is the first topic. MD का full form है Molecular Dynamic Simulations. Basically, what it does is we have certain force fields. Force fields और potentials भी बोलते हैं इनको. Based upon these potentials, you find out the interaction that is taking place between the atoms and molecules. Okay, and after you find out interaction, you find out the force that is acting on the molecules. Force that is acting on the molecules, and after you do it, what you do is you update the velocity and position. Dynamics इसलिए यूज होता है because update the velocity and position of the molecule based on the interaction that is taking place. Now, this is important. What type of interactions? Interactions हम बोल रहे हैं. सारे materials में तो same type of interactions नहीं होंगे. ठीक है? Like consider gas or metal. Let's say ionic solids. Ionic bonds, for example, covalent bonds. You have 2D lattices. So you have different types of materials. Each and every type will have its own interactions. So, based upon these different types of system, जो force fields है, ये change होता है. जैसे कि यहाँ I'm just giving names of certain force fields. Leonard Jones. ये लो सुना पहले नाम? Leonard Jones potential. LJ potential बोलते हैं. क्या है basically? Leonard Jones potential इसको बोलते हैं कि for non-bonded atoms. तो ऐसे जो atoms that are not initially bonded, if a bonding takes place between these atoms, then what type of potential will take place. तो इसका जो diagram है, figure है, वो है इस तरह से consider U R, then this is how it looks like. I think you have already seen in different cases. इसको लिखा जाता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, यू आर इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन सिग्मा आई सिग्मा, सिग्मा आई जे, सिग्मा आई सिग्मा जे R I J to the power 6 minus R I 12.
12 and oh, इतना लिख दिया. इसमें जो पैरामीटर्स है, what are the parameters? First of all, Rij. What is Rij? Rij is the position vector. I जो दो एटम है उनको Ij डिनोट करते हैं. Atoms, two atoms, one is I and one is J. और जो पैरामीटर है that is this one. और ठीक है. What is sigma? Sigma is bond atomic diameter या bond length भी बोल सकते हो इसको. ये because at sigma is equal to r, what will happen? What will happen to this u? It will be 0. At sigma is equal to r. 0 नहीं बस मिनिमम. नहीं, सिग्मा अगर 0 हो जाएगा ना 1 minus 1 से. सर मतलब क्या बोलते हैं इसको? x is equals to r पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है. नेगेटिव p क्या है ना सर? वो होता है 4 0 होता है सर. हाँ 4 0. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. तो बेसिकली द अच्छा एनिमेशन में देखते हो. तो इट इज वन ऑफ पैरामीटर जिसमें कि एक्चुअली ये ऑसिलेट होता है. दिस इज एक्चुअली द सिग्मा एम. सिग्मा राइट. फोर जीरो होता है राइट. बिकॉज एफ इज इक्वल टू du by dr. This force will be equal to 0 at sigma is equal to, if Rij is equal to sigma. तो और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं कि पोटेंशियल वेल्थ और इंटरैक्शन एनर्जी. or bond energy, whatever you may call it. This gives you the how deep is the potential, how the atoms are attached with each other. So, इस चीज का this is the LG equation and this is applicable for non-bonded systems. उसी तरह से there are some more equations. So, if I would like to represent this one, this LG equation in Python, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? Lennard-Jones in Python. बेसिक पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है. बेसिक अगर इंपोर्ट समथिंग, इंपोर्ट n u m by as nb. This is the first command. Then I will say I will import matplot.pyplot. Matplot.pyplot. Matplot.dip.pyplot. Matplot.dip.pyplot.
as E and P as plot. Then I need to define the parameters. कौन से parameters define करेंगे? Epsilon and sigma और R. ठीक है ना? ये जो तीन parameters के ऊपर बेस करके चीजें चेंज होती हैं. I will first say that epsilon n is equal to 1 and sigma is equal to 1. Okay. Then I will define the Lennard-Jones UR is equal to 4 star epsilon bracket sigma. यहाँ पे एक चीज है कि ये जो R का वैल्यू है, मैं R का वैल्यू को तीन सेट में लूँगा, टेक इट एज अ सेट. फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि 2 से आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज धीरे-धीरे चेंज हो रहा है. तो फर्स्ट टेक R एज इक्वल टू, इसको बोलते हैं NP डॉट लाइन स्पेस. NP dot line space, मतलब coordinates as a coordinate system. So I will write it as equal to 0.8 30. जो प्लॉटिंग करेगा ये तीन आर्क्स के बेसिस पे करेगा. Then sigma divided by R स्टार 12. अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो Lennard-Jones पोटेंशियल का, ये वाला जो टर्म है, इसको बोलते हैं पॉलीज रिपल्शन टर्म. Pauli's repulsion term. और ये वाला जो टर्म है, call it as van der Waals attraction term. Pauli's repulsion क्यों होता है? Electron cloud, because of the overlap of electron cloud. Overlap of electron cloud. Okay, this is the reason for Pauli's. और van der Waals attraction होता है because of dipole interaction. Dipole interaction. तुम लोग लिमिट क्रॉस करते हो, क्या वो कह रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? क्लास में नहीं रहना तो बाहर जाए. समझ को नहीं आता. कोरोना बैच हो कैसी दे क्या? क्लास में +2 एंड +10 ऐसे ही. आई थिंक दैट इज द रीजन. एग्जाम में पढ़ के पास करना भी होता है, कोई आइडिया नहीं. यदि डिस्टर्ब तो नहीं करो, ठीक है? बात में क्लास नहीं करना तो बाहर जाना. So this is van der Waals interaction. This is the dipole interaction taking place. Now, if I represent, I need to represent this one as equal to sigma divided by R star 6. So this is how I present the expression in Python. और उसके बाद I simply give plot, py plot, UR
and R. इसके अलावा I can modify, I can customize this plot by using different colors. उससे कुछ codes होंगे. So जो plot मुझको मिलेगा, if I use 3 different cases, right? जैसे कि if I use 0.9, so मान लो यहाँ पे 20, यहाँ पे 98, and then I use say 0.1, 10 and 50. तीनों केसेस में मुझको 3 अलग प्लॉट्स मिलेंगे. तो हाँ, इंटरेक्शन एनर्जी अभी फिलहाल इसको 1 लेके ही चल रहे हैं. Going to the details. The interaction, just how to represent the MATLAB उसको करें, because Epsilon डिपेंड करेगा lot of things पे. इस टाइप का मतलब इसको भी फिलहाल we are considering this as equal to 1 इस केस में. See the effect of the स्कोर को सर अगर मैटलैब में लिखना होगा, पाइथन में डाल सकते हैं. anyway पाइथन में इसलिए डालते हैं कि बिकॉज पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है. मॉडिफाइड प्लॉट कैसे मिलेगा? क्या मिलेगा? प्लॉट मिल जाएगा. हाँ ये इनफैक्ट मैंने किया था प्लॉट.